Evening all. So let's begin with today's session. Look at the first question. With reference to PEG Silica, consider the following statements. The first statement says it is a Russian-led initiative. No, that's not correct. It is American-led initiative, not Russian one. Second statement says it aims to build a secure supply chain ranging from critical minerals, energy inputs to advanced manufacturing and semiconductors. This statement is absolutely correct. Somewhere, PEG Silica initiative, it aims to end Chinese hegemony over the critical minerals and the rare earth elements, right? So basically, this American led initiative is targeting Chinese dominance over the artificial intelligence and semiconductor supply chain. So the second statement is correct here. The question is which of these statements given above is oblique are correct? So correct answer is B for Bombay. Only the second statement is correct here. Now look at the explanation why we picked up this question. So recently America invited India to join this initiative, right? So it is the American led initiative, not the Chinese one. Now let's move on to the next question. Look at the second question. Operation Hawkeye Strike. It is an ongoing retaliatory military action by whom? It is by America against the ISIS group targets across Syria. See what happened in December 2025. In December 2025, ISIS targeted American soldiers in Palmyra. Where is Palmyra? It is in Syria. So in this ambush, 3 American soldiers were shot dead. So it is American response, right? So Operation Hawkeye Strike, it is an American response. तो ये एक्शन था, ये रिएक्शन है, right? So look at the explanation part. So you can see here, America launches new retaliatory strikes against ISIS in Syria after deadly ambush. Palmyra में अटैक हुआ था दिसंबर 2025 में, उसी का रिएक्शन है, right? Now let's move on to the next question. So question is, which of the following countries share a land border with Syria? Turkey, yes. Iraq, Jordan, Israel, Lebanon. All the countries, they form land border with Syria. So select the correct answer using the code given below. Correct answer would be all, means 1, 2, 3, 4, and 5. C for Calcutta would be the correct answer. Now look at the explanation part. So you can see the map here. Just a moment. You can see the map of Syria. So this is Syria with the capital Damascus. So Syria forms its immediate border with Iraq, with Jordan, with Israel, with Lebanon, and with Turkey, right? And it forms a huge coastal area with the Mediterranean Sea. So why we picked up this question? Because Syria was in news recently. So I hope you guys understood that why we picked up this question. तो सीरिया न्यूज में है इसलिए हमने इस क्वेश्चन को पिक किया. Now let's move on to the next question. So look at the question number 4. With reference to removal of judge, consider the following statements. The first statement says, a judge may be removed from the office through a motion adopted by the parliament on the grounds of proven misbehavior and incapacity. Absolutely correct. See, ये बात अलग है कि मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी का कहीं पे भी कोई डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अवेलेबल नहीं है, राइट? ऑल्दो दिस स्टेटमेंट इज absolutely correct. Second statement says the constitution provides that a judge can be removed only by an order of the president based on a motion passed by both the houses of parliament. This is absolutely correct. The third statement says the procedure for the removal of judges is provided in the Constitution of India. No, that's not correct. The procedure, the detailed procedure is available in the Judges Inquiry Act of 1968. Do remember, not in the Constitution of India. So the third statement is incorrect here. The last statement says the speaker or the chairman decides whether to admit the motion for removal. This is absolutely correct. So 1, 2, 3. These 3 statements are correct here, except the statement number 3. Question is, which of these statements given above is oblique are correct? So correct answer would be 1, 2, and 4. So B for Bombay would be the correct answer here, right? Look at the explanation part first, why we picked up this question. There is a strong reason, guys. अभी जस्टिस वर्मा जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उनके अगेंस्ट में इम्पीचमेंट मोशन आ सकता है. देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी. और एक इन हाउस कमिटी जो है उसका फॉर्मेशन हुआ था, एक इन हाउस मैकेनिज्म का, उनके चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए. उन्होंने इसी इन हाउस मैकेनिज्म की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को बेसिकली चैलेंज किया है कोर्ट ऑफ लॉ में, इसलिए ये टॉपिक न्यूज में है, right? So judges of the Supreme Court and High Courts can be removed only on the grounds of proven misbehavior or incapacity. Article 124 Clause 4 and Article 217. So Article 217 is for the judges of the High Court.
The Constitution lays down the grounds and broad framework, but the detailed procedure is provided in the Judges Inquiry Act of 1968, not in the Constitution itself, right? अब ये जो इन हाउस मैकेनिज्म है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. बेसिकली जो जजेस का इम्पीचमेंट है दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर, लेकिन इन हाउस इंक्वायरी, जो इन हाउस इंक्वायरी है दैट इज अ जुडिशियल एवोल्यूशन. एंड व्हेन दिस इन हाउस इंक्वायरी प्रोसीजर वाज एस्टैब्लिश्ड, इट वाज अडॉप्टेड इन 1999. और ये किस जजमेंट का आउटकम था? इट वाज द आउटकम ऑफ रविचंद्रन अय्यर वर्सेस जस्टिस ए एम भट्टाचार्य जी केस. तो इस जजमेंट के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट केम अप विद द इन हाउस मैकेनिज्म. तो जो इन हाउस मैकेनिज्म है वो बेसिकली किस केस का आउटकम है, इसको कब अडॉप्ट किया गया, ये आपको पता होना चाहिए. और याद रखिएगा, इट वाज अ जुडिशियल एवोल्यूशन, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म, राइट? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर 5, with reference to Lake Natron, consider the following statements. The first statement says it is located in northern Tanzania. Absolutely correct. The second statement says it is a soda and salt water lake with no outlet to the sea. Absolutely correct. The third statement says high evaporation leaves behind natron and trona deposits in the lake. Absolutely correct. All these statements are correct here. Question is, which of these statements given above is oblique are correct? So all these statements are correct here. D for Delhi would be the correct answer. Now look at the reason why we picked up this question. Volcano made this. How a Rift Valley lake petrified, a myth. So Lake Netron in Tanzania glows blood red, forged by the volcanoes and extreme chemistry. Its alkaline waters preserve animals like stone, wild flamingos thrive in a deadly Rift Valley marble. तो आप देख सकते हैं रेडिश पूरा का पूरा यहाँ पे कलर है इस लेक का, और हाईली अल्कलाइन इन नेचर है इसका वाटर, सॉल्ट वाटर लेक है ये, राइट? यहाँ पे आपको जो सोडियम कंटेंट है ये, आप इसका कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा मिलेगा. सो ड्यू टू इंटेंस इवेपोरेशन, मिनरल्स सच एज नेट्रॉन मींस सोडियम कार्बोनेट एंड ट्रोना accumulate, giving the lake its extreme alkaline nature. Right? So याद रखिएगा, it is a highly saline and soda lake with no outflow, making it an endorheic basin. चलिए, now let's move on to the next question. With reference to Mercosur, Southern Common Market, consider the following statements. The first statement says it was set up in 91 under the Treaty of Asuncion. Absolutely correct. Second statement says its founding members are Argentina, Brazil, Paraguay, and Uruguay. Absolutely correct. See, later on, two more members joined. Like Venezuela joined this initiative, and recently Bolivia also joined this initiative in 2024. But Venezuela jo hai, Venezuela remains suspended, right? Do remember. So third statement says it aims to promote free movement of goods, services, capital, and people among the member states. Absolutely correct. Question is, which of these statements given above is oblique are correct? So all these statements are correct here. D for Delhi would be the correct answer. Now the question is why we picked up this MCQ. So there is a strong reason. See, recently European Union and the Latin American bloc, Mercosur, they signed a historic deal. Although 25 years से negotiations चल रहे हैं, लेकिन finally अब ये negotiations जो हैं ये अपने like culmination की तरफ हैं, and soon it would be a reality, right? So Mercosur was created in 91 through the Treaty of Asuncion by Argentina, Brazil, Paraguay, and Uruguay. The bloc seeks deeper economic integration by enabling the free movement of goods, services, and the people among its members, right? तो याद रखिएगा कौन कौन से members हैं. फाउंडिंग members क्या के नाम याद रखिए, ट्रिटी का नाम याद रखिए जो फाउंडिंग ट्रिटी है. So this question may come up in your examination. Now let's move on to the question number 7. With reference to section 17A of the Prevention of Corruption Act 1988, recently news consider the following statements. First statement says section 17A mandates prior sanctions before initiating any inquiry or investigation against a public servant for acts done in discharge of official duties. Absolutely correct. So the prior sanction is required
to initiate an inquiry of corruption against the government officials. Absolutely correct. तो बेसिकली काइंड ऑफ लीगल कवर मिल रहा है, इम्यूनिटी मिल रही है यहाँ पे कि बिना गवर्नमेंट सैंक्शन, बिना गवर्नमेंट अप्रूवल के आप इस तरह की करप्ट की कोई भी इंक्वायरी आप इनिशिएट नहीं कर सकते हैं, राइट, अगेंस्ट अ गवर्नमेंट ऑफिशियल. सेकेंड स्टेटमेंट सेज, in a recent judgment, Supreme Court delivered a unanimous verdict declaring Section 17A of the Prevention of Corruption Act 1988 unconstitutional. No, that's not correct. Why? Because it was not a unanimous decision. It was a split verdict. So question is, which of these statements given above is oblique correct? So correct answer would be only one. अब यहां देखते हैं हम कि आफ्टर ऑल हमने इस क्वेश्चन को पिक क्यों किया. देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रीजन. देखिए यहां पे ध्यान से, सुप्रीम कोर्ट delivers a split verdict on validity of the Prevention of Corruption Act 17A, right? अब सेक्शन 17A जो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन जुलाई 2018. इट मैंडेट्स prior sanction before initiating any inquiry or investigation against a public servant for actions taken in the discharge of official duties. अब ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली इसके क्या आउटकम्स हो सकते हैं, राइट? इसके प्रोज एंड कॉन्स को समझना आपको जरूरी है. अब यहां जब सुप्रीम कोर्ट में इस मैटर पे जब बातचीत चल रही थी, तो यहाँ पे जो दो जजेस हैं, दोनों के यहाँ पे जो ओपिनियंस हैं उसको समझने की कोशिश करिएगा. सबसे पहले देखिए यहाँ पे, जस्टिस बीवी नागरत्ना, she held it unconstitutional for shielding corruption, while Justice KV Vishwanathan upheld it, stating that prior sanction protects the honest officers from motivated probes. तो एक तरफ क्या हो रहा है, एक तरफ सेक्शन 17A ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को शील्ड प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है. अब लेट्स सपोज कि करप्ट ऑफिशियल्स हैं, तो करप्ट ऑफिशियल्स जो हैं उनको भी शील्ड प्रोवाइड कर रहा है, और जो ऑनेस्ट ऑफिसर्स हैं उनको भी शील्ड प्रोवाइड कर रहा है, राइट? वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें, बेसिकली व्हाट हैपेंस कि जो ऑनेस्ट ऑफिशियल्स हैं उनके अगेंस्ट में कई बार पॉलिटिकली मोटिवेटेड कंप्लेंट्स होती हैं. तो दूसरी तरफ इन पॉलिटिकली मोटिवेटेड कंप्लेंट्स को ये बेसिकली कंट्रोल करने का काम कर रहा है, उसको अंडरमाइन करने का काम कर रहा है. तो हर एक्शन का जो है प्रोज एंड कॉन्स होते हैं. सो आई होप यू गाइस अंडरस्टूड दिस. तो स्प्लिट वर्डिक्ट था, ये यूनानिमस नहीं था. सो लुक एट द क्वेश्चन नंबर 8. द सक्सगम वैली, also known as the Trans-Karakoram Tract, is located in, the correct answer is B for Bombay, in the Hunza Gilgit region of Pakistan's occupied Kashmir, right? So this region is illegally occupied by Pakistan. So it is situated north of Siachen Glacier. अब ये लोकेशन प्रेजेंट में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में है दोनों कंट्रीज के, इंडिया और चाइना के प्रेजेंट में, राइट? सो सक्सगम वैली, इट इज ऑल्सो नोन एज द ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट. इट लाइज नॉर्थ ऑफ सियाचिन ग्लेशियर. आप देख सकते हैं, दिस इज सियाचिन ग्लेशियर, उसके नॉर्थ में सक्सगम वैली है. 1962 में 1963 में बेसिकली व्हाट हैपन कि जस्ट इंडो चाइना वॉर के बाद में पाकिस्तान ट्रांसफर्ड दिस टेरिटरी टू होम, टू चाइना, राइट? तो लोकेटेड है पाकिस्तान के इलीगल ऑक्यूपाइड कश्मीर में, लेकिन इसको पाकिस्तान ने ट्रांसफर कर दिया था चाइना को 1963 में. So the area was ceded by Pakistan to China in 1963 through, though India continued to claim it as part of Jammu and Kashmir. So India's stand is pretty clear that the entire Kashmir, every inch of Kashmir that belongs to India, right? तो चाहे वो POK हो या फिर वो अक्साई चिन हो, ये सभी इंडिया के इंटीग्रेटेड कश्मीर का पार्ट है. अब ये देख सकते हैं आप कि हमने इस क्वेश्चन को क्यों पिक किया था. देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रीजन. सो व्हाट इज द इंडिया चाइना डिस्प्यूट ओवर द सक्सगम वैली इन कश्मीर, राइट? द न्यू इंडिया चाइना फ्लैश पॉइंट एंड द पार्क्स लीगल हैंडओवर. चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. With reference to biosafety level 4, BSL4 facility, consider the following statements. The first statement says, India's first state-funded BSL4 containment laboratory is being established in Mumbai. No, that's not correct. It is being established in Gujarat and not in Mumbai. Second statement says the BSL4 represents the highest level of biological containment for handling the highly infectious pathogens with no proven vaccines or treatments. This is absolutely correct. So which of these statements given above is oblique correct? So only two.
So B for Bombay would be the correct answer. Now the question is why we picked up this MCQ. So look at this one. So India's first state-funded BSL-4 laboratory is being established in Gandhinagar, Gujarat, and not in Mumbai. Right? Second statement is absolutely correct. अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, this is very important. अगर हम प्रेजेंट में एग्जिस्टिंग BSL-4 फैसिलिटीज की बात करें तो एक है सिविल फैसिलिटी और दूसरी है डिफेंस फैसिलिटी। सिविल फैसिलिटी लोकेटेड है पुणे महाराष्ट्र में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। एंड जो डिफेंस डिफेंस फैसिलिटी है BSL-4 फैसिलिटी, इट इज सिचुएटेड इन ग्वालियर एमपी, राइट। एंड इट कम्स अंडर द DRDO, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। DRDO कंट्रोल करता है इस तरह की लेबोरेटरी को, डिफेंस लेबोरेटरी को, राइट। सो अगर हम बात करें हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज लेबोरेटरीज इन इंडिया, तो बेसिकली इस तरह की जो लेबोरेटरी है वो प्रेजेंट में सेटअप है भोपाल में। भोपाल इज इन एमपी, राइट। और इसको जो स्टेटस मिला है दैट इज ABSL 3+। क्लियर। और प्लान्स हैं इस तरह के ABSL-4 लेबोरेटरीज को सेटअप करने का, कहां पे? भुवनेश्वर, उड़ीसा में, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। With reference to National Culture Fund, NCF, consider the following statements. The first statement says it is a trust set up to promote, protect, and preserve India's tangible and intangible cultural heritage. Absolutely correct. Second statement says donations to NCF are eligible to be counted as corporate social responsibilities. CSR contributions under Schedule 7 of the Companies Act of 2013. Absolutely correct. The third statement says the governing council of NCF is chaired by the Secretary of Culture. No, that's not correct. It is chaired by the Minister of Culture, not the Secretary of Culture. Question is which of these statements given above is oblique are correct? So correct answer would be only 2, 1 and 2. So A for Ahmedabad would be the correct answer. याद रखिएगा एनसीएफ मतलब नेशनल कल्चर फंड। यहाँ पे जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस होंगे कंपनीज के थ्रू, दे वुड बी काउंटेड एज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013, राइट। इस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है। अब यहां देखिएगा व्हाई वी पिक्ड अप दिस क्वेश्चन, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रीजन। अभी टिल डेट तक के क्या होता है कि जितने भी कल्चरल हेरिटेजेस हैं इन सभी को प्रिजर्व करने का, प्रोटेक्ट करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है। अब सरकार एक नया पॉलिसी लेकर के आई है, इसमें इस सेक्टर को ओपन कर दिया गया है PPP मॉडल के थ्रू प्राइवेट प्लेयर्स के लिए। अब प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, वो भी रिस्पॉन्सिबल होंगी इस तरह की टेंजिबल और इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेजेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको प्रिजर्व करने के लिए। So I hope you guys understood why we picked up this question, right? So this was the last question of today's session. मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, एंड उम्मीद करता हूं कि आप सबके लिए ये सेशंस बेहद हेल्पफुल हैं। और प्लीज ट्राई टू लाइक एंड कमेंट ऑन द वीडियोस, एंड कोशिश करिए कि ये वीडियोस आपके कंपेनियंस, आपके साथियों तक पहुंचे जो इस समय सिविल सर्विसेज की प्रेपरेशन कर रहे हैं। तो मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।